The meaning of myofascial. Myo means muscle and fascia means a covering. Like we have seen, हमने संतरा देखते हैं, संतरे के अंदर संतरा एक वाइट मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है ना। पहले संतरे का छिलका निकालते हैं, फिर वो व्हाइट मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है। वो व्हाइट मेम्ब्रेन पूरे संतरे को पकड़ के रखती है, राइट। सो द fascia is same like the white membrane in the orange who envelop each and every part of the orange together. In the human body we have fascia. So from top to bottom it's like and just keeping all the things at their own place. That is the fascia. So myofascial means when we do some stimulation, when we do some massage. Suppose I'm doing massage here. I'm doing massage. So I am doing little deeper massage. So I am going on the muscles as well as on the facial level, not on the skin. हम केवल स्किन के लेवल पर नहीं, right? So we are going little deep, like a deep tissue. Okay? That is the myofascial. So in the myofascial, then we have to aware with the name of the muscles. हमें muscles के नाम से भी aware होना पड़ेगा. Then because in every different disease, the different muscle involved. In some problem, the cervical muscles are involved. Like someone is suffering with a torticollis. Torticollis एक बीमारी है. Torticollis is the disease. एक मसल इन्वॉल्व होती है, उस मसल का नाम है SCM मसल. तो हर डिसीज में एक पर्टिकुलर मसल इन्वॉल्व हो सकती है, लाइक टॉर्टिकोलिस. टॉर्टिकोलिस. इफ यू सी हियर, ये देखिए, दिस द कॉन्ट्रैक्टेड मसल. कौन सी मसल है? SCM muscle or the sternocleidomastoid muscle. It is contracted. So there are many problems in the different problem. There are different and the various muscles are contracted. कई अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग प्रकार की मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, right? And very common, if you know, कि कई बार लोगों को मिडिल स्कैपुला में पेन होता है. The people are suffering with the pain of mid scapula. दोनों स्कैपुला के मध्य में होने वाला दर्द. Let's see in this image. Many times people are suffering the pain with the pain here. We can see this part. So in this part there is a muscle named rhomboidus. Rhomboidus muscle. तो अगर आप इस इमेज में देखें, like you can see, this is the rhomboidus muscle. So we have to work on this muscle. So we should have the proper knowledge of all the muscles. Then we will go a little deeper. From deeper जाएंगे, the people who doing gymming, they are having lots of muscular pain. So now we can see this is the rhomboidus muscle, rhomboidus major and minor. So in this sequence, I would like to discuss with you about the certain muscles one by one. मैं आपसे कुछ muscle discuss करना चाहूँगा. So the most important, first let's start with the muscles of the spine. हम कुछ spine के muscles से start करते हैं. Let's see here. So this is the head region. ये हमारा सिर है. Let's after the head region we know our spine starts. हमारी spine start होती है. So the first muscle we can see trapezius muscle here, and the trapezius muscle bilateral. Sometimes this muscle is having some problem, then we are telling trapezitis, right? तो ये trapezius muscle we can see हमारे कंधों पर भी आ रही है और ये नीचे तक जा रही है. It's going further down, right? We can see here. So this is the trapezius muscle. Let's see in the other image. Okay.
So this is the trapezius muscle on both the side. It's a very important muscle. तो जब हम कहते हैं ना यार कंधों में दर्द हो रहा है, तो कई बार इस मसल में दर्द होता है। जब कोई व्यक्ति कंधे पे पालकी उठाता है तो इसी मसल के ऊपर उठाता है, राइट? व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग ऑन द शोल्डर, यू आर यूजिंग दिस मसल इज इनफ स्ट्रॉन्ग, ये मसल काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बट एंड वी कैन सी इट, दिस मसल इज हैविंग कनेक्शन विद ऑक्सीपुट, ये मसल हमारी ऑक्सीपुट से कनेक्टेड है। और देन मसल इज गोइंग इन द शोल्डर, देन फर्दर डाउन, ओके, नीचे तक जा रही है। इफ वी रिमूव दिस मसल, अगर हम इस मसल को हटा देते हैं, नाउ विल सी, अगर हम इस मसल को हटा दें, लेट्स सी नाउ वी कैन सी, ये हमारी स्पाइन है, इसे कहते हैं न्यूकल लाइन। ये न्यूकल लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू व्हाट इज द न्यूकल लाइन। ये न्यूकल लाइन है। सो लेट्स सी द न्यूकल लाइन। ओके, सो दिस इज द न्यूकल लाइन। सपोज दीज आर द वर्टिब्रा, और हमारे गर्दन के ठीक पीछे ये न्यूकल लाइन होती है। गर्दन के पीछे दिस इज द न्यूकल लाइन, राइट? दिस इज द न्यूकल लाइन। तो अगर आप गर्दन पर अपने हाथ घुमाते हो, देन यू विल सी दिस न्यूकल लाइन। ये न्यूकल लाइन सिर्फ गर्दन में होती है, नीचे इसका नाम अलग होता है। इट्स हैविंग डिफरेंट नेम इफ यू गो फर्दर डाउन। अगर आप नीचे चले जाते हो तो इसका नाम अलग होता है। सो द मेनी पीपल आर सफरिंग विद अ पेन इन द न्यूकल लाइन। कई लोगों को इस न्यूकल लाइन में तकलीफ होती है। सो लेट्स सी हियर, ये हमारी if you see in the image, okay, चलिए मैं आपको दूसरी इमेज में दिखाता हूँ। लेट्स सी इन द अदर इमेज। सो लुक एट हियर नाउ, कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पाइन, तो जब हम स्पाइन की बात करते हैं, लेट्स सी द स्पाइन हियर, एंड दीज आर द स्पाइनस प्रोसेस। ये हमारे सारे स्पाइनस प्रोसेस हैं, ये हमारी वर्टिब्रास है। वी कैन सी दीज ऑल आर वर्टिब्रास, राइट? दीज ऑल आर वर्टिब्रास। सो वी कैन सी मल्टीपल वर्टिब्रास हियर। हम कई सारे वर्टिब्रास को मार्किंग, वी आर मार्किंग द मल्टीपल वर्टिब्रास हियर, राइट? इफ यू सी ऑन द बैक साइड ऑफ द वर्टिब्रा, अगर आप वर्टिब्रा के बैक साइड में देखें, if you see on the back side of the vertebra, तो एक ये लिगामेंट है जस्ट पीछे की ओर, ये लिगामेंट, दिस वन एग्जैक्टली ऑन द बैक साइड ऑफ द vertebra. So this is called supraspinous ligament. Supraspinous ligament. And when this ligament reaching to the neck, it becomes very, very thick. And it is called nuchal line. जब ये लिगामेंट बाकी स्पाइन में होता है तो कहते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, और when it is reaching to the neck, it is called nuchal line. Okay, fine. तो चलिए हम वापस आते हैं अपने मसल्स वाले पार्ट पर। लेट्स सी हियर, कमिंग बैक टू द मसल्स पार्ट हियर। सो द अपर मसल इज द ट्रापेजियस, सबसे ऊपर की मसल ट्रापेजियस से लेट्स रिमूव इट, इसे निकाल देते हैं। नाउ वी कैन सी द मेनी मसल्स। अब हम देखेंगे, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। सो सी स्प्लीनियस कैपिटिस, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर द मेमोराइज द नेम, just go through once. Splenius capitis, this is the muscle of our neck. ये हमारे गर्दन की मसल है, Splenius capitis, right? So this is the splenius capitis. We can see how this muscle is located, how this muscle is holding your
कैसे ये मसल हमारा स्कल से कनेक्टेड है, राइट। सो मेनी टाइम वी आर हैविंग पेन हियर, कई बार हमें साइड में पेन होता है, वी आर सफरिंग विद अ पेन हियर। सो दिस द नंबर वन मसल दैट इज कॉल्ड स्प्लीनियस कैपिटस, ओके। और हम कह सकते हैं इसे गर्दन की कैप, फाइन। सो व्हेन द पर्सन इज हैविंग पेन ऑन द स्प्लीनियस कैपिटस, जब भी व्यक्ति को स्प्लीनियस कैपिटस में पेन होता है और गर्दन में दर्द होता है, सो वी डू कपिंग हियर, हम यहाँ पर कपिंग करके मायोफेशियल रिलीज करते हैं। वी डू द myofascial release here. Let me show you. Let me show you through the image. Then I will do the entire practical demonstration at a time. पूरा का पूरा practical demonstration एक साथ कर लेंगे। So look at it in this image. Yeah. तो अब हमें सब मसल के एक बार नाम से गो थ्रू होना है, स्प्लीनियस कैपिटिस। So look at here, this is the splenius capitis muscle. So this is the muscle of neck and we put the cups here. हम यहाँ पर कप लगाते हैं। We will understand that how to put the cups here. हम समझेंगे कि यहाँ पर कप को कैसे लगाया जाए, okay. So this is the splenius capitis, number one. Now we can see how this muscle is coming and supplying the entire area. We know on the side we are having gallbladder meridian, हमारे जहां पर स्कल खत्म होता है उसके साइड में हमारा gallbladder meridian होता है। So when you see the gallbladder 20, आप अगर gallbladder 20 पॉइंट देखें, I have seen all the patient having neck pain, जितने भी पेशेंट को गर्दन का दर्द होता है, तो आप दोनों तरफ दबा के देखिए कौन सा बिंदु, ये वाला। यू प्रेस दिस, आप ये वाला पॉइंट दबा के, you press this point, that is gallbladder 20. Press on the right side, then press on the left side. If the person is telling you that he's having pain in the right side, it means right side muscle is having problem. If the patient is telling you if I'm feeling pain on the left side, means left side muscle is having problem. तो ये हमारा gallbladder 20 बहुत ही शानदार एक हमारा मार्कर है। So this is the gallbladder 20. In the TCM this is called the pool of बिंड, यानी हमारी बिंड का स्विमिंग पूल, ऐसा बिंदु जिसमें बिंड काफी है, जो बिंड को निकालता है, बिंड को बैलेंस करता है। इट्स बैलेंस द बिंड, इट एक्सपेल द बिंड। सो दिस इज द gallbladder 20, ये हमारा gallbladder 20, right? Even in the acupuncture TCM we are putting the needle here, we are doing acupressure here. Right now we are discussing splenius capitis muscle, so this point is very much useful. हम यहाँ से नीचे की ओर कपिंग करते हैं। डेफिनेटली इफ वी आर हैविंग हेयर, सो इन दैट पार्ट इट्स डिफिकल्ट टू स्टक द कप, लेकिन हम नीचे की ओर थोड़ा सा कप लगा सकते हैं। हम थोड़े से कप को हम नीचे की ओर लगा सकते हैं, राइट? ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम आगे देख रहे हैं। सो वी आर कमिंग टू द मसल पार्ट, जस्ट वी हैव सीन द स्प्लीनियस कैपिटस। अभी भी हमने देखी स्प्लीनियस कैपिटस, राइट? तो ये हमारी स्टर्नोक्लेटो, ये हमारी स्प्लीनियस कैपिटस। अब हम इसे निकाल देते हैं। लेट्स रिमूव द स्प्लीनियस कैपिटस, इसको निकाल देते हैं, इसे कैप मसल को निकाल देते हैं। सो आई एम रिमूविंग द बोथ साइड ऑफ द स्प्लीनियस कैपिटस, रिमूव्ड। अब देखिए गर्दन, नेक इज एक्सपोज्ड विदाउट द स्प्लीनियस कैपिटस। अब हमारी नेक में
स्प्लीनियस कैपिटस नहीं है। सो द साइड मसल, ये जो साइड की मसल है आप जो देख रहे हैं, अब देखिए जैसे स्प्लीनियस कैपिटस को निकाला, देन द साइड मसल इज कॉल्ड लॉन्गिसिमस कैपिटस। ये भी कैपिटिस ही है, ये भी कैप है, लॉन्गिसिमस कैपिटस, दोनों कैप है, ये भी हमारी लॉन्गिसिमस कैपिटस, राइट। सो स्प्लीनियस कैपिटस, on the side we have longissimus capitis. Longissimus मतलब लंबी लंबी, right? So definitely when we are doing cupping here, at a time we are covering both, दोनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे, right? तो चलिए इसको भी हटा देते हैं, let's remove it, remove। अब हम बात कर रहे हैं साइड में एक मसल और है गर्दन की, दिस इज कॉल्ड स्प्लीनियस सर्विसेज, क्योंकि सर्वाइकल की बात कर रहा है। So this is called splenius cervicis, right? These all muscles are painful. Splenius cervicis. Okay, because we have talked about the cervical, we are talking about the cervical area. So this is called splenius cervicis. तो स्प्लीनियस कैपिटिस के लिए हम कप यहां लगाते हैं, वी आर पुटिंग द कप हियर। Maybe not 4 cup, even 2 cups are enough. But when the question of splenius cervicis, we will put the cup on little side. हम कप को थोड़ा सा साइड में लगाते हैं, splenius cervicis. Okay. And we can do the myofascial. So we will remove the muscle, we will remove the cup, then we will do the gentle massage here. We will see how to do the gentle massage. हम देखेंगे कैसे हम gentle massage करते हैं. So let's remove this also. And now I am removing splenius cervicis. Removed. तो हमने 3 मसल्स की बात की अभी तक, स्प्लीनियस कैपिटिस, splenius capitis, right? Then from the capitis we have longissimus capitis, and from the splenius name we have splenius cervicis. ठीक है, इसके 2 पार्ट कर दिए, एक हो गया स्प्लीनियस सर्विसेज, एक हो गया longissimus capitis. So 1, 2 and 3 muscles we have seen in the neck area. Okay. So now we are further going down. अब हम नीचे जा रहे हैं, ये लंबी लंबी मसल्स क्या है, ये है हमारी, this is also capitis. All the muscles here are called capitis because these muscles are around the spine. So we are telling semi, see. So semi means half this side and the half this side. So semi spinalis capitis. ये हमारी मसल है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, राइट। So we can see the same muscle on the right side and the left side. ये हमारी मसल राइट साइड में भी है और लेफ्ट में भी है, right? This is on the right side and left side as well. So let's see here. Let's see this. So this is the semi-spinalis capitis, right? On both sides. And here we also have our spine, हमारी vertebrae भी है, that we know we have vertebrae. So let's see how they look like. See, look at here. ये कैसी दिख रही है? तो ये हमारी vertebrae है. They are the vertebrae. Cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7. And these are the caps. So semi-spinalis capitis.
राइट। तो इन दिस वे हमने इन मसल्स की बात की। सो इफ वी आर कमिंग बैक हियर, द फर्स्ट मसल वी हैव सीन Splenius capitis. The second we have seen Splenius cervicis here. Okay. So in this way, we will do the cupping here and will work for the neck pain. हम neck pain पे work करेंगे. Whenever someone is suffering with any spinal problem, जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी spine की problem होती है, suppose someone is suffering with the cervical spondylosis or some cervical problem, cervical pain. That time these muscles are getting inflamed. तब ये मसल हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो चलिए एक बार मैं नाम लिख रहा हूं सबके, फिर आप भी नाम लिखिएगा सबके। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ द मसल ऑफ सर्वाइकल एरिया। द outermost muscle is trapezius muscle. Then after that we have seen Splenius capitis. Then we have seen longissimus capitis. Then we have seen Splenius cervicis. And then we have seen Semispinalis capitis. इतनी मसल आप लिख लीजिए कि कभी मसल का नाम आए तो समझ में आए भाई गर्दन की मसल की बात हो रही है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको थोड़ा याद रखना पड़ता है, बाकी ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन understand these muscles, right? Now these all the muscles having connection with the vertebra. ये जितने भी मसल हैं इनका कनेक्शन वर्टिब्रा से है। So how they are connected with the vertebra? We can see here anyone. हम कोई भी मसल देख सकते हैं। Let's see now. Suppose someone is having the problem of cervical spondylosis, trapezius muscle might painful. किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, ट्रापेजियस मसल दर्द कर सकती है। And because of the trapezius muscles, this pain will be referring down. The problem is here, but the pain will be till here. Pain will be till here because of trapezius muscle, right? So number one, we have to remember this. Now, after removing the trapezius muscle, let's talk about the, अगर हम बात करें हमारी अगली मसल की, Splenius capitis. So we can see the person will be having pain on the side of the neck. कि व्यक्ति को गर्दन के साइड में दर्द होता है, right? Fine. So in this way, person might suffer with the problem. Now, if we rotate the neck, अगर हम गर्दन को rotate कर दें, and if the person is having pain exactly on this side, so this might be due to the SCM muscle, because this is the SCM muscle. ये हमारी sternocleidomastoid muscle है, SCM muscle, sternocleidomastoid muscle. इस मसल का, इस नाम का मतलब क्या है?
What is the meaning of sterno? What is the meaning of cleido? What is the meaning of mastoid? Anyone? ये एससीएम मसल का जो नाम है ना, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, इसका अर्थ क्या है? यस, यस सलवा जी, स्टेप। हाँ, म्यूट अगेन, अनम्यूट अगेन। So it's sternum, clavicle, and mastoid. All these three parts will form this muscle. So it will connect to the mastoid bone, which is at the back of the ear, and it will come and connect to the sternum bone in the front, and clavicle. It passes through the clavicle bone, so it connects the muscles, connects all the three areas. Very good, Salva ji. So this is the sternum bone. ये हमारी sternum bone है. We can see this is the sternum bone, right? And this is the clavicle bone, collarbone. So sternum means sterno, clavicle means cleido, and here we have mastoid. यहाँ पर हमारी mastoid process है. So this is the sternum bone. This is the clavicle. We are telling cleido, and here we have mastoid process. So the muscle who connect this up, that is called sternocleidomastoid muscle, जिसे हम SCM muscle कहते हैं या sternocleidomastoid muscle कहते हैं, right? Only 1 minute. So let's do the practical demonstration. So now you can see he is my friend, Dr. Jay Krishna. He is wonderful osteopath. Show your face. Okay. He is the number one osteopath in our entire batch. So now we will do the
demonstration of cupping. Yeah, removed. Channels. No, sitting. Never. So we are having various size of the cups. So we are choosing small cups, right? So we are having various size of cups, like we are having this bigger cup. Bigger cup we can use at the different locations. And in between, we also apply the gua sha. Okay, so I will demonstrate. This gua sha is also very good for the myofascial release. And they are the small cups, right? These are the small cups. And definitely it's very difficult to, you can't start the curve if there are hairs like somewhere. So we have to work very proper. So initially what we can do, either we can apply this chain, either we can apply simply like the first I am applying simply without applying any oil or something, just for the demonstration. So remember one thing, where our neck is ending. So we can see this is the location where cervical ends and thoracic starts. Can you bend your neck? We can see the protrusion here. There is a junction of C7 and T1. Everyone can see the elevated part protrusion here. जब हम गर्दन को आगे मोड़ते हैं तो यहाँ पर ये उभरा हुआ भाग दिखता है. Because this is the junction of C7 and T1. So we are putting one cup here. It's a very wonderful. So you can see this cup stuck, right? We can remove also like this. Or when we want to remove, the other way of the removing the cup, we pull this knob up. Then it's automatically coming out. So this is a very easy way to bring out the cups. Suppose if we are doing like this and removing the knob, it can come out properly. Sometimes we want to pull the skin little. So we remove the cup like this. So right now I am doing just a dry. So let me start from here because the person is having neck pain. So just we have seen on the side we have Splenius capitis. On the side we have Splenius capitis, right? The longissimus capitis. In the center we have nuchal line. This is the nuchal line in the center. And this nuchal line becomes supraspinatus process here. Here we have supraspinatus process and here it becomes nuchal line. So whatever the name of muscle, just forget it and apply cupping here. Now it's very difficult to stuck the cup here on the hair. On the hair, if we want to stuck, then we have to take the support of one electric cupping. So that electric cupping creating continuously vacuum. So we'll go a little down. Okay. Where hair are not present. So we can see this cup got stuck, right? This cup got stuck. Sometimes it might fall down also if vacuum is less. So we are putting the cup to the other side. Let's see this. Okay. So we are further going down here. You can see the cup, bigger the cup, covering the bigger area. And you can see the cup also having different shapes and size. Okay. In the market, there are many different types of the cupping sets are available. So in this, we can see
And if you want to buy this cupping set, very good quality cupping set, you can order also from Omacard. In that we are giving very good quality of cupping set. So we can see all cup got stuck here. So let it be there for 3 minutes minimum. 3 minutes. Okay. So this is the number one technique. How to release neck pain. Someone is suffering with the migraine headache. Someone is having headache. Then we cover from C4 to C6 or T1 area. Till here, if we put the cup, we can also work for migraine headache. Okay. We can put the one cup here also. We can see the small cup. We can put in the center also. Okay, small cup. So very little vacuum. Okay. So now we can see. Right. Let me take one photo for you. After the 3 minutes are over, then we'll start removing the cup. There are two methods of removing the cups. Number one, release, pull the knob, it will coming out automatically. See. Or you can just remove like this. Okay. So the method number two, what we do, we apply the oil. So we are taking little oil and we apply in this neck area. Remember one thing, when you do cupping on the shoulder, that you have to do the cupping on the shoulder in a very special way, very specific way. Suppose same thing if you repeat on the shoulder pain might aggravate. अगर आपने ऐसी कपिंग शोल्डर पर कर दी तो शोल्डर का पेन एग्रीवेट हो जाएगा. तो शोल्डर पर कपिंग करने का तरीका बिल्कुल है. We have to keep the shoulder in a certain posture, then we have to do the cupping. So we can little stimulate here this. Here we are having many nerve endings. As per the skull acupuncture, this is a very good area which is called circulation area. So improve the circulation throughout the body as well as respiratory area to improve breathing pattern. So it's very good for the asthma patient. So we can do the gentle massage first. So see how we are doing. From the broader aspect, we are taking the finger up, then we are coming in the center, then moving down. In the murmur therapy, this is a very important point here. So after applying the oil, we are going from till the T1, thoracic one area. Now we can do cupping here. We can apply the cups in the same way. Now you can see, first I'm applying the cup in the same way. Small cup applying in the upper area. Remember one thing, in the center we have to apply the cup, but don't give it too much back. We have to be a little careful when we apply the center. If the person is healthy, then there is no problem. But if the person is suffering with some disc bulge, then if you apply the cup in the center with a great pressure, it might aggravate the pain. So I'm applying the bigger cup here, the bigger area. So we can choose the different size cup.
So when the 3 minutes are over, minimum, it's not fixed 3 minutes. You can keep 1 minute only. You can go for 7 minutes also. But I will not recommend going more than that because sometimes there might be little bit skin problem. But many people also going 7 minutes, even 10 minutes, right? So let's remove. Now the method number 3. The first method just dry cupping. Second method oil cupping. Method number 3. Again, first we have to apply the oil. We have taken the oil and applying the oil. And doing little gua sha. This is the gua sha equipment. Investing 5 minutes minimum for gua sha. So when we do gua sha, do very calmly, very quietly, and invest 5 minutes minimum. If the area is bigger, then we have to invest more time. तो कम से कम 5 मिनट तो करिए. अगर एरिया बड़ा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं. So first we apply the oil, did the gua sha, then we apply the curbs. So in this way we are having various methods here. And it's very smooth procedure. Anyone can do. It's very, very smooth procedure. Sometimes cup might fall down. If suppose air is less or it is not holding that area properly, sometimes cup might fall. So that's why this cup is made very different type of the silicone. Even the falling down, there is no problem. So after doing this, you can wash it very properly, cup. Then you can reuse for the other patient. In cup को धोकर आप use कर सकते हैं. But when we do blood cupping, then we are not reusing the cups. अगर हम blood cupping करते हैं, तो वो cup हम फेंक देते हैं. Right? We are not using that cups. I am doing very gentle stimulation without doing any vigorous pressure.
So this was the quick demonstration. We will see the different type of demonstration in the different body parts. Like for the shoulder, we have different type of distribution. Thank you, Dr. Krishna. Then you want? Yeah. Class on? No, class is going on. You want towel? So it's clear? Understood? Okay. Any question? If anyone is having any question, you can ask. Yeah, 1 minute. Unmute yourself. Sir, सर आप जो भी बोले ना थियरी वो जरा वापस रिपीट करेंगे क्योंकि कुछ सुना नहीं सर। क्या एक्सप्लेन करूं? आपने जो ब्लड का बोला ना कि ब्लड कपिंग में करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो ये कप को अगर वापस यूज नहीं करते। अच्छा फेंक देते हैं? हाँ सर अब ये बात भी फेंकने का भी नियम है कि जब इसे हम फेंकते हैं तो डस्टबिन में नहीं फेंकते, राइट? वी आर नॉट थ्रोइंग इन डस्टबिन, वी आर properly throwing in the with the biomedical waste if we are doing blood cupping, because blood, if you are throwing the blood cotton or something like that is illegal, right? So that's why all the hospitals and everyone is throwing it to the biomedical waste. People are coming and taking biomedical waste. कि हर शहर में एक ऑफिस होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, हर शहर में. So they go everywhere to each and every clinic, to allopathy clinics, to dental clinics, to all the clinics, and after that, thank you, Doctor. Okay, after that, they are collecting all the cottons and hand gloves. अच्छा बढ़ा बोलो बाहर. Everything. अच्छा बाहर ले हो ये बोलो टाइम. कि भैया म्यूट करो भैया आपने. Sir, in the Sir. cup, there is something blue color which you have fixed inside now, sir. What it is and why it is for? In the other company, it is not there. It is in many cups it's not there. It's just for support, nothing else. It is just a different design. Okay, It's sir. like, see, in this it's not there. Can you see? Okay, sir. In this it's there. Yeah. It's just a fixing device. Like जब हम दीवार में कील गाड़ते हैं, we are putting the keel in the दीवार wall. So first we are putting some like wooden particle, something fixing. Okay. For grip. Okay, sir. And this will help us even in the disc bulging or any other problem will be solved, or it is only for giving a pain management? No, for solving. The cupping is a very wonderful method. I will tell you, even the master told you that the 10 patient come to you. अगर आपके पास 10 patient आते हैं, करिए भाई, गाड़ी की, बुलेट की सब आवाज सुना दो उनको इधर ही, है ना? आवाज है. Excuse me, sir. Yeah, so we can work. Master told 30% disease can be cured by blood leaking. So cupping, in the cupping we do normal cupping, we can do blood cupping, rakta mokshana, we can do cupping massage. I will tell you, cupping is wonderful treatment. If you keep on doing rhythmically, it will work on many problems from the root. ये root से कई problems को ठीक करता है. Yeah, yes, please. Next question. Sir, yes. Sir, I have a question.
प्लीज। सर मैंने पूछना था कि जैसे कपिंग अभी आपने डेमो दिया तो उसमें वी हैव टू डू 2 times लाइक यू। हाँ पूछिए आगे। वी हैव टू। जैसे आपने कपिंग अभी डेमोस्ट्रेट आपने हाँ 2 टाइम कपिंग करा वो ठीक है, तो हाँ। हमें भी 2 टाइम ही करना है। आई एम डूइंग ओनली 1 time No, no, और no. 5। I have done 3 demonstration. Like one is dry cupping, second with oil, and यस third gua sha. You can do any one. ओके थैंक After यू। this. तो सर कोई एक एक ही करना है सर, है ना? हाँ एक ही। जी सर। सर Yes. कल मैंने एक मतलब कपिंग की थी और उसमें थोड़ा ब्लड लेटिंग करा था। तो जी। एक कप पर किया था पीठ पर। तो उसके बाद जो ब्लड निकला उस ब्लड में एक तो दाने से निकले हाँ और दूसरा उसमें लेसा था, जैसे उसको वाइप किया तो उसमें लेसा था। उसका क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने ब्लड लीडिंग किया और कुछ समय के बाद ब्लड को कलेक्ट किया तो उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, है ना। क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, थक्का बन जाता है, खून जम जाता है थोड़ा। तो रेशियो तो नॉर्मल होता है, सबके होता है। ओके, थैंक यू सर सर। हाँ सर मसाज करना जरूरी है सर के ड्राई कपिंग करते हैं सर तो पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के करे तो बेटर है कि और उसके बाद में गौशा करना जरूरी है सर? कोई या जरूरत नहीं अलग है। अलग एक तीनों ही चीज? डिफरेंट तीनों डिफरेंट वेरिएशन है। कोई भी एक कर सकते हैं आप। जो आप जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं कि हमने यूवी 13 पर कप लगा के बिठा दिया उसको 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट। फिर तब तक फिर हम उसको बुला के फिर बाकी से ट्रीटमेंट दे देते हैं। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ कप लगा के बिठा देते हैं, है ना। सो वी कैन डू दैट। तो 3 मेथड्स, यू कैन चूज एनी वन, राइट। सर तीनों के अलग अलग इफेक्ट है या सेम ही इफेक्ट होता है? डेफिनेटली एवरीथिंग इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट, है ना। फिर आप इसमें और भी, उसमें भी इफेक्ट तो होता ही। अगर आप किसी को हाथ थोड़ा मसाज करोगे तो मसल और रिलैक्स हो जाएंगी, है ना। और गुआशा करोगे तो थोड़ा सा और रेडनेस बढ़ जाएगी। तो मतलब इफेक्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो गई होगा। That depending on chronic and acute. इट इज नॉट लाइक दैट कि क्रॉनिक और इट लाइक इट डिपेंड कि पेशेंट की बॉडी कैसी। किसी किसी पेशेंट की बॉडी को में अगर डेफिशिएंट सी डिसीज है। आपने मालूम है कि कई लोग क्या करते हैं कि घर पे आते हैं, चल कहते जो हैं। रहा। सबको मैं म्यूट ही कर देता हूं। कई बार क्या रहता है कि कई लोग कहते हैं यार थोड़ा सा पैर दबा दो, हाथ दबा दो, सिर दबा दो, है ना। कहते हैं उनके दबाव ना तो उनको बड़ा आनंद आता है। मैंने पर्सनल है ना कि कोई तो मेरा थोड़ा सा ऐसे कर दो और करते रहो, है ना। वाई? बिकॉज यू आर हैविंग सम डेफिशिएंसी। तो जब डेफिशिएंसी कंडीशन होती है ना तो थोड़ा मसाज करोगे तो पेशेंट के दिल से दुआ निकलती है। दुआ, और दुआ के साथ, है ना। तो पेशेंट अगली बार मालूम है आपके पास जब आता है तो वो उस पुराने एक्सपीरियंस के कारण आता है जो उसे हुआ लास्ट टाइम। ही हैड गुड एक्सपीरियंस, ही विल कम, राइट। उसे लगेगा आपने तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कप लगाए थे, फिर कप दर्द पैदा किया और पेशेंट भाग गया, पेशेंट चला गया। बट ही विल बी थिंकिंग, ओह यू डिड वेरी ब्यूटीफुल मसाज, देन यू डिड कपिंग। So because of that experience, he will come, and it's good for patient as well as for you. Patient having good experience, you are having also repeated patient, right? It's good for both of you. Okay. तो इफेक्ट तो आता ही है ना कि if the person is having एक्सेसिव डिसीज मतलब उसे बीमारी ऐसी है जिसमें ऊर्जा बढ़ी हुई है तो उसे मसाज अच्छी नहीं लगेगी। फॉर देम नो नीड टू डू दिस मसाज। He will be, no, I'm not feeling comfortable. But some patient will feel, keep on doing, keep on doing, keep on doing. कभी कभी तो पेशेंट इतना परेशान करते हैं, आपको मालूम है। अभी मैंने एक पेशेंट को कपिंग किया, सर थोड़ा सा हाथों में भी लगा दो, ठीक है लगा दो कप्स।
सर थोड़ा कल बहुत एक्सरसाइज की, दर्द हो रहा, पैरों में भी लगा दो। भैया तू लगवा, कहाँ कहाँ लगवाना है, लगाते लगा। चलो ठीक है, ऐसा होता है। सर ऐसा मैं तो सर मसाज करके बाद में कपिंग करती हूँ, मतलब थोड़ा सा ऑयल कर लगा के उसके बाद में। रिजल्ट तो सर अच्छा मिलता है। डेफिनेट, इट्स गुड। और डिस्पोजेबल सर माइग्रेन के लिए थोड़ा ही वैक्यूम बढ़ना है। क्या? माइग्रेन अगर हो किसी को तो बीच में आपने जो कप लगाया तो उसमें वैक्यूम थोड़ा बढ़ना है। नहीं नहीं, महंगे कब तो नहीं भरना है। मैंने कहा कि किसी को अगर डिस्क में बल्ज है, माइग्रेन, स्लिप डिस्क है, तब ध्यान हाँ, रखें। माइग्रेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे लगाना चाहें। अच्छा अच्छा। सर ये मसाज कपिंग के पहले ज्यादा अच्छा है या कपिंग के बाद? पहले ज्यादा अच्छा है। बाद में क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, कभी कभी थोड़े रेड मार्क्स बन जाते हैं, थोड़ा हम हमारे द्वारा क्लियर किया हुआ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जी। इसके बाद वो मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उतना मजा नहीं है जितना पहले, राइट? पहले सर। मसाज पहले कर दो, फिर कब लगाओ। तो क्या होगा कि बाद में कब निकालोगे, ये थोड़ी रेड मार्क्स हो गए हैं, थोड़ा हम इन्फ्लेमेशन हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर ब्लड लेटिंग कौन कौन से प्रॉब्लम में क्या एडवाइजेबल? क्या जो हम वेट कपिंग कौन से डिसीज वो आप में? समझेंगे ना अभी जब आए, अभी अभी जब आएगा तो बात करेंगे उसकी, है ना? स्टेप बाय स्टेप। डन। तो चलिए, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना इनफ। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच। सर आज का रिकॉर्डिंग सर मिलेगा? रिकॉर्डिंग तो सारे ही मिलेंगे, केवल आज का ओके थैंक यू सर, सारे आज मिस हो गया थोड़ा कल भी इसलिए। 9:15 ना? कल भी 9:15 ना? यस यस। थैंक यू सर, इट्स थैंक यू गुड सर। टाइम। थैंक यू थैंक सर। यू सर। वेलकम। सो टुमारो